Hey guys, welcome back. So I'm CA Kavita Dhakar and I'm working in Infosys from almost 1.5 years now. Hey guys, my name is CA Sachin Agarwal and I am working with Big Four from the last 4 years. So basically I'm working as an Oracle Functional Finance Consultant here, and in my profile there are two types of project. One is implementation and another is support. So I'm working in an implementation project. As a functional consultant, we have to fulfill the client requirements. We have to give them the Oracle implementation solutions, whether it can be custom solutions or standardized solutions. So this is not very much related to our CA curriculum, but of course the basic knowledge of finance is needed. I am working in Indirect Tax profile. Indirect Tax means GST ki profile. So my basic work includes GST returns, advisory, due diligence, GST audit, refunds, appeal, commissioner appeal या फिर high court appeal, appearance before the authorities. So it is primarily into a purely taxation works, right? So initial package, if I want to talk about the CA campuses, like the campus which happened for the fresher CAs, so initial package is a little bit higher than the Big Four. On an average, currently the average package for industries is going about 10 to 15 LPA. So currently initial package of all the Big Fours range around, for a fresher CA, it's range around 8.5 to 10 lakh rupees. So increment is a little bit less in industries, not little bit, actually there is a huge difference between the big four increments and industry increments, so you have to compromise this part. So actually increment depends on your performance and the parity, basically what other people are getting on your job level in the same organization, your ratings, your manager, your team, your project. So it depends on so many factors. So particularly if I'll talk about IT industries, the average increment rate is somewhere between 5 to 8% here. So increment is actually high as compared to industry. In Big Four we get a better percentage of increment. It generally varies and it totally depends on your rating and your work performance, right? So basically minimum increment you can say it's 10 to 15%, but maximum it can goes up to 25% also. So yeah, no point. So I don't know about others, but Infosys is really having world-class work culture. It is very, very awesome. People are very, very supportive here, and the best part is people are approachable. Like even if you're talking with the delivery manager or the project manager now, you will never feel that you are on a lower job level. They will treat you with so much of respect and so much of thanksgiving and everything. It is awesome. Actually, it is awesome, and it really gives me very good sense of satisfaction. So as far as my experience is concerned, like my experience regarding the work culture is awesome. Like I never expected that I will get this good treatment here. क्या ही बोलूँ अब मैं इस पॉइंट पे, तो सबको पता है. So learning, I will say that it is a little bit slow. See, there are proper procedures for this. So first of all, there will be your training, and then after that you will be on some bench period where you are not doing nothing. You are just learning, or you are just doing certification and courses. And after that, once you will assign the project, then like very gradually you will start working on the project. Very gradually you will take up things on yourself. So there is very slow pace of learning here. या लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली यार बिग फोर इज़ वेरी गुड, यस, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक तो काम बहुत ज़्यादा है आपके पास, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आर देयर, राइट? अलग अलग तरीके का काम आपको करना होता है, हर दिन कुछ नया आप सीखने को मिलता है, तो लर्निंग इज़ रियली वेरी वेरी गुड. ऑब्वियसली जब आप इतना सारा काम करोगे तो लर्निंग तो झक मार के अपने आप आपके पास आ ही जाएगी. So work-life balance is always going to be better than the Big Four here, and of course exceptions are always there, but yes, on comparison I think work-life balance is pretty much good here. Of course यार, बुरा हाल कर देते हैं. No work-life balance, actually no work-life balance in Big Four. Totally work, no balance. So growth, like if I'll talk on monetary terms, then of course monetary terms मैं increment में cover कर चुकी हूँ, but हाँ, अगर आप लोग industry switch कर रहे हो, then on an average you will get 30% hike easily in any type of profile. And overall personality की बात करें तो that depends on you. Yeah, monetary growth is obviously better than industry because इतना खून चूस रही हैं तो पैसे तो देंगे ही ना. Of course, I'm happy and I'm pretty much satisfied with my job, and I'm a person like who have got so many hobbies, so many other things to do apart from the job. So, and I'm getting that. I'm getting that time for myself, for my family, for traveling, and for YouTube, for my friends, everything. Like I'm getting a proper time. So I'm very happy. The mental peace is very good here. In this profile, like if you will go in Big Four also, then there is not very much workload. Of course, it will be more than the industry, but not very much like the auditing and taxation. I wanted to try something new, to do something different. And this is actually different from our course. Yes,
एक्चुअली आई एम हैप्पी बिकॉज मेरे को शुरू से ही आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ अ टैक्स प्रोफाइल, राइट, और वो मुझे मिल गई बिग फोर में. तो एक्चुअली माई प्रोफाइल इज वॉट आई वॉन्ट. सो एक्चुअली आई एम हैप्पी irrespective of the fact of work culture and about anything, but yes, I am happy with my company and my work profile. So I think before choosing industry or big four, you should choose your profile, like in which domain you want to work. There are so many things to explore as a fresher CA. Like you can go in auditing, taxation, transfer pricing, and then finance, FP&A, and this ERP, IT audit. So there are so many profiles, and every profile is different. And you know, your first profile more or less impacts your whole career. So decide the profile first, and then think like where you can get the ample opportunities in this profile. For example, if you want auditing, then of course auditing is best in the big four. Suppose if you want the finance, then for finance, if you want any particular field in finance, for example the costing and budgeting, then you can go with the industries itself. And if you want something in the investment bank, then there are so many investment banking options are there. So I think first decide the profile, and then you can grow in your career. As far as newly chartered accountant या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम कंक्लूड करें कि क्या फ़र्क था और किस तरीके से आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि सर दिस इज़ फाइन, हमें डिफरेंस पता लग गया, लेकिन एज अ फ्रेशर सीए हम कैसे चूज़ करें कि हमें बिग फोर में जाना है या फिर इंडस्ट्री में जाना है. तो देखिए उसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. डिपेंड्स, जैसे लेट्स से इट डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आपको आगे जाके करना क्या है, राइट. जैसे लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल कोई बच्चा ये कहता है कि मैं सीए बनाऊँ और मुझे आगे जाके प्रैक्टिस में जाना है, राइट. तो और प्रैक्टिस में भी जाना है, मुझे टैक्स प्रोफाइल में प्रैक्टिस करनी है या ऑडिट करना है, तो ऑब्वियसली बिग फोर इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. सो इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर कि किस फैक्टर में. अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो लर्निंग पे फोकस करना है, तो ऑब्वियसली लर्निंग इज ऑलवेज देयर इन बिग फोर. अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है, जैसे लेट्स से यू आर कंफ्यूज एंड यू आर नॉट श्योर कि मुझे किस प्रोफाइल में अभी जाना है. तो इसमें होता क्या है कि जनरली अगर आप इंडस्ट्री ऑप्ट कर लेते हैं ना एक बार, तो जनरली ये फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली होता क्या है कि एक बार जिन्होंने इंडस्ट्री ऑप्ट कर ली उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिग फोर में वापस आना. बट बिग फोर में जो लोग एक बार चले जाते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलवेज वांट टू टेक अ पर्सन हु हैज़ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ बिग फोर, राइट. बट येस, बिग फोर वाले जनरली प्रेफर करते हैं कंसल्टिंग फील्ड के बच्चों को ही. तो ये एक फैक्टर है कि इफ़ यू आर टोटली कंफ्यूज एंड यू नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, तो जस्ट गो फॉर बिग फोर इन माई पर्सनल व्यू, बिकॉज वहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपकी क्या कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होगी. एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ईजिली डिसाइड कि स्विच करना है इंडस्ट्री में या फिर बिग फोर में रहना है. तो जनरली ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो हमने अभी बात की. So I think we have covered most of the requested points. So let's end this video here, and thank you so much guys for watching till end. If you have some topic suggestions, then please do comment in your comment box. We will collab and we will research on it, and we will definitely provide that. दोस्तों, thanks for watching our video. This is our first collaboration and I hope ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे जाके अगर आपका साथ रहा तो हम और भी कोलैबोरेशन करेंगे. इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक या सजेशन जो हम आगे इनकॉर्पोरेट कर सकें, या किसी टॉपिक पे वीडियो अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं, तो वही आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा. और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. And please subscribe my channel and Sachin Sir's channel for more such useful content. Thank you so much for watching.